Good morning, class 10th. As in yesterday's video, we have started Unit 2. Unit 2 counts for the making of nationalism in Europe. Fine. So, today I will be starting my topic from Unit 2.1. Yesterday, we have gone through the political conditions of Europe till mid-18th century, as in which we have studied that there were no nation states. Germany, Italy didn't exist. The strongest empire at that time in the Central and Eastern Europe was the Habsburg Empire. Today, we will be discussing about another aspect, that is the condition of the society or the social classes till mid-18th century. When we talk about society at that time, number one, the society that existed was the aristocracy. Aristocracy means the people who considered themselves rich, who considered themselves elite, who had large estates with them. Here the estates automatically matters that they were having lots and lots of land with them. Moreover, as they were landed aristocracy, they were rich, they were elite, ultimately they were considered as the dominant class, so socially as well as politically. भाई हमारे देश में अंबानीज की हम सुनते ही हैं. रिजल्ट वही है, because they were basically the land owning class and they were considered to be the dominant for the purpose of politics, for the purpose of diplomacy. They spoke French. So they don't spoke the local dialects, or they didn't encourage the regional dialects. They spoke French for the purpose of diplomacy. They have large lands, large estates in the rural areas as well as the town houses in the cities. Moreover, they were numerically, नंबर में ऐसे लोग कम होते हैं. कितने अमीर लोग हैं? If I start counting the population of India out of 130 crore, I just will get the data of 30 crore who have getting an income for more than 1 crore per month. इससे ज्यादा तो नहीं निकल सकते. So numerically they will be less. They were not more in number. And because they were socially and political dominant, they don't want to move out of their society. They just were against the other social classes. They tied themselves into families. They tied themselves into marriages so that they became the dominant class. जैसे एक राजा की बेटी की शादी एक राजा से ही होती है, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए. ऑब्वियसली अगर ये क्लास मेजॉरिटी में थी, तो जो दूसरी क्लास थी वो थी peasantry. Peasantry मेजॉरिटी में थी. If aristocracy was 30%, they constitute the 30% of the population, then peasantry at that time constitutes the 70% of the population. But regarding peasantry, one thing to remember, these were different in Western as well as Eastern Europe. When we talk about West Europe, here West Europe means the France and the regions or the provinces towards the west of France. Fine. There were small farmers, there were tenant farmers जो अपनी जमीन किराए पर देते हैं कि आप इसके ऊपर खेती कर लीजिए. वहां पर इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का हिस्सा था, फ्रांस के ईस्ट में था, या जहां पर हैब्सबर्ग एम्पायर था, ऑस्ट्रिया और हंगेरी जैसे पार्ट्स थे,
वहां पर पीजेंट्स को सर्फ, SERF, सर्फ्स बुलाया जाता था. एंड यस, दे वर totally under the clutches of their land owners. उनकी हालात खराब थी. आपको याद होगा हमने नेपोलियनिक सिविल कोड में किया था that Napoleon decided to give freedom to the peasants. He abolished serfdom. Serfdom एक तरीके की गुलामी ही होती है. Mid 18th century तक ये सब चलता रहा. Then comes the change. In western and central part of Europe, industrial production increased. Question comes, why the industrial production increased? Because in England, जिसे हम ब्रिटेन भी कहते थे उस समय, वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो. 1757 में हुआ, यानी मिड में हुआ. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई तो फैक्ट्रीज बढ़ गई. फैक्ट्रीज बढ़ गई तो शहरों में लोगों ने आना शुरू कर दिया. It led to the growth of towns. The demand of workers increased. The workers started basically getting jobs over there. And ultimately it gave an emergence to the third class. हमने पहला पढ़ा aristocracy, second पढ़ा peasantry, third was the new commercial class. ये कमर्शियल क्लास असल में प्रोडक्शन करती थी मार्केट की नीड्स को ध्यान में रखते हुए. कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है. 18th सेंचुरी के एंड तक तो ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ. बट एज सुन एज यूरोप एंटर्ड इनटू द 19th सेंचुरी, तो फ्रांस और जर्मनी में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गई. इंग्लैंड से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रांस और जर्मनी की तरफ हो गया. सो अ न्यू वर्किंग क्लास एमर्ज्ड, जो सैलरी थी, जो फैक्ट्रीज में काम करती थी, जो पढ़ी लिखी थी. इसे हमने मिडिल क्लास बुलाना शुरू कर दिया. इस मिडिल क्लासेस के अंदर कुछ स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने इंक्लूड किया, बिजनेसमैन को इंक्लूड किया, प्रोफेशनल क्लास को भी इंक्लूड किया. They started living, लेकिन as soon as they started living together in towns, they started interacting with each others, they started recognizing the need for national unity. That industrial production हो या market हो या profits हो, ये तभी हासिल किए जा सकते हैं जब देश एक हो. और देश एक तभी होगा जब प्रिविलेजेस को खत्म किया जाएगा, इक्वालिटी को लाया जाएगा. इन लोगों ने अपनी समस्याओं को आपस में शेयर करना शुरू किया और एक नए पॉलिटिकल कंसेप्ट को बर्थ दिया, जन्म दिया, रोज किया. हम इस कंसेप्ट को कहते हैं लिबरलिज्म. About liberalism we will be studying in our next class. अभी आप इतना ही करिए. Thank you, class 10.